Fantastic. Just give me a second. I'm just going to start very quickly. Lovely and awesome. Hi everyone, it's fantastic to have you all here. Finally on Friday at 4. बहुत समय के बाद हो रहा है Friday at 4 because I was traveling, I was speaking at NIBM, I was speaking at IIMs and बहुत सारी चीजें मैं कर रहा था दोस्तों, जिस कारण से मेरी आप लोगों से मुलाकात Friday at 4 पे नहीं हो पाई. Warm welcome रविंद्र, किरण नायक, विकास, Hassan Ali, glad to see you also here. Anubha, बलबीर, नीरज मलिक, आप हो क्या यार ब्रह्मास्त्र वाले. आपने तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेड बनाया है, ट्रेड निकाला है. और मेरा कैमरा थोड़ा सा हैंग हो रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई एम जस्ट गोइंग टू बी देयर विथ यू अगेन. एंड फैंटास्टिक रश्मि, ग्लैड टू सी यू. एंड यहाँ पर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Market is rocking and the levels are working despite of whatever is happening in the market because of the event and everything. The levels are working fantastic. People who are watching this on YouTube, do not forget to subscribe the channel, like, share it across, comment आपके नीचे डालते रहिए. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे मुझे ये फ्राइडे एट 4 करने में मजा आता रहे. एंड ये बहुत जरूरी है. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अक्रॉस माय लिंक ऑफ Zoom platform. If you're joining on the Zoom platform, it will be easier for you to participate. एंड यहाँ पर महेश रेड्डी, आपके ऊपर एक जो YouTube पे देख रहे हैं यहाँ पर, I can see there is the number one people who are there on YouTube also. They are getting some kind of leadership board. Mahesh Reddy, R.K. Parmar, I can see that. And fantastic. Lovely. So I can see there is some new feature. Rahul Kapoor and those people who are there, they are there on the leadership board. Lovely. So market की बात करते हैं. यहाँ पर before I move on to the market, I just want to take a very quick poll and ask all of you, what do you think is the Nifty trend in the coming week? यहाँ पर मैं बहुत ही quickly एक poll ले रहा हूँ. And where is the poll gone? And I am asking you, निफ्टी ट्रेंड इन द कमिंग वीक, इज इट बुलिश, इज इट बेरिश? यहां पर बहुत क्लियरली ये इंपॉर्टेंट पोल है. एंड ये पोल में पार्टिसिपेट करिए. बहुत सारे जन यहां पर आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि पोल में पार्टिसिपेट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मार्केट का व्यू क्या है. पोल आपके इधर मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है. प्रकाश को आवाज नहीं आ रही है. डायरेक्टर साहब सबको हेल्प करिए. एंड लवली. तो चलिए यहां से अभी ये पोल को मैं एंड कर रहा हूं. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल है. पीपल हु आर देयर ऑन जूम, देयर ऑन यूट्यूब, अगर आप ये पोल में जुड़ना चाहते हैं तो यू हैव टू ज्वाइन मी ऑन द जूम प्लेटफॉर्म. एंड आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस द रिजल्ट हियर. There are 44% of the people expecting upside, 56% expecting downside, and what's going to happen, I'm going to share across. आज का जो ट्वीट क्या था, अगर आप ट्वीट को फॉलो करते हैं तो बहुत क्लियरली आई मेंशन्ड अक्रॉस दैट मार्केट जो भी कुछ कर रहा है दोस्तों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये मार्केट स्कैल्पिंग ट्रेड था अभी तक, और यहां से शायद पोजिशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऐसा लग रहा है. स्कैल्पिंग मतलब होता है इंट्राडे में ट्रेड किया, शॉर्ट टर्म में ट्रेड किया, स्कैल्प किया और मार्केट से बाहर निकल गए. पोजिशनल होता है आज लिया, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, पोजिशनल अपॉर्चुनिटी के लिए. आज का भी जो ट्वीट था मेंशन था कि अगर 24,400 के नीचे निफ्टी अगर जाता है, 24,340, 24,320 तक जा सकता है. 60-70 पॉइंट्स का मूव था, जबरदस्त मिला. और कल लग रहा था, कल का जो मूवमेंट आया था मार्केट में फाइनल आवर में, फाइनल क्लोजिंग तक जो जबरदस्त ट्रेंड मिला था मार्केट में, वी वर एबल टू सी दैट एंड इट वाज लुकिंग दैट मार्केट्स आर गोइंग टू गो शार्पली ऑन दी अपसाइड. लेकिन रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद में इसने जैसे ही नीचे का सपोर्ट ब्रेक किया 24,430, ट्रेंड नेगेटिव साइड पे टर्न हो गया था. दैट इज व्हाट वी कैन क्लियरली सी. नाउ लेट मी गो ऑन द चार्ट एंड शेयर अक्रॉस वेरी सिंपली what is the overall outlook looking at the concept of time cycle. And we are going to look at that concept of time cycle. And
what it is suggesting. And one very powerful method that I want to show across to all of you with this time cycle concept is the concept of FLD. FLD एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट है, एंड यहां पर मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में बहुत ही क्लियरली इस मेथड को। वो शेयर करने के साथ में एक सिंपल सा, अगर आप मेथड थ्री कैंडलस्टिक रूल का अगर आप देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड यहां पर क्लियरली थ्री कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से मार्केट ने रिवर्स नहीं किया है काफी दिनों से। सो इफ यू आर लुकिंग एट दिस चार्ट, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, एवरी वन ऑफ यू? स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? Let me just increase the size of the screen, and if you are able to see this, give me a big thumbs up guys if you are able to see the screen, so that I know आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लवली, फैंटास्टिक। तो आप लोग जो स्क्रीन यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर बहुत ही क्लियरली एक प्राइस एक्शन जोन मैंने मेंशन कर रखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था। और ऐसा लग रहा था यहां पर उसने एक फेल्ड ब्रेकडाउन दिया है, रिवर्स हो गया था कल जब फेल्ड ब्रेकडाउन, और आज का हाई, सॉरी कल का हाई निकालना चाहिए था, बट प्राइस इज फेल्ड टू टेक आउट द हाई ऑन द अपसाइड। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? कांट सी? लेट मी जस्ट रीशेयर माय स्क्रीन अक्रॉस अगेन फॉर पीपल हु आर नॉट एबल टू सी इट। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ, एवरी वन ऑफ यू? स्क्रीन अगर दिख रही है तो एक कंफर्मेशन दे दीजिए विथ that you are able to. Okay, awesome. Big thumbs up. That helps. Okay. Fantastic. Chetan, Ankit, Ganesh. Lovely. So if you are able to see the screen here, what is the overall trend that we want to understand? Candlestick. Simple three price action rule के हिसाब से अगर मैं देखूं, यहां से ट्रेंड नीचे का शुरू हुआ था, इस कैंडल ने ऑलमोस्ट वहीं पे बंद किया था, और अभी तक एक भी क्लोज प्रायर हाई के ऊपर नहीं हुआ। ये कैंडल बहुत स्ट्रांग थी, एंड ये कैंडल से ऐसा लग रहा था कि ये फॉल्स ब्रेक नीचे आया, रिवर्स हो सकता है, लेकिन इस हाई को निकालना जरूरी था। बट प्राइसेस डिड नॉट ब्रेक द हाई, एंड देयर इज एन एक्सेप्टेंस back below the low of yesterday, and this has been the dangerous territory which now stands broken. This also was the time cycle support जो कि बहुत अर्ली था, that also now stands broken, which means the overall trend, which is your friend. Remember one thing दोस्तों, trend is your friend, is on the downside. If I'm looking at the weekly chart and I'm hiding across everything, 1 2 3 4 5 वीक्स हो चुका है, निफ्टी प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं दे पा रहा है, मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ है वीकली में, डेली में गड़बड़ है फिलहाल के लिए। और ऐसे में एक कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे हम टारगेट डिराइव कर सकते हैं, उसको कहते हैं FLD का कॉन्सेप्ट। ये जो FLD होता है दोस्तों, ये मैंने लाइन यहां पर प्लॉट कर दी है। FLD 6 वीक्स इसीलिए बोल रहे हो आप क्योंकि वो पहला कैंडल था, वो हाई के ऊपर था। मेरे लिए वो कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कैंडल जहां से थ्री कैंडलस्टिक रूल रिवर्स हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ लाइन विच वी कॉल इट एज FLD। नाउ this FLD line is a very important line, and it represents very crucial concept. What is that FLD का concept and why this line is so important? यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए जस्ट फॉर रेफरेंस कि ये भाई FLD होता क्या है। दिस इज द लाइन विच वी कॉल एज FLD, फ्यूचर लाइन ऑफ डिमार्केशन। प्राइसेस यूजुअली इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है, यहां पर हुआ, जितना इंटरसेक्ट यहां होता है उतना ही दैट मच इट ट्रेवल्स बैक ऑन द अपसाइड। सो प्राइसेस इंटरसेक्टेड दिस मच and then gives the target of on the upside. This FLD line is derived using Hurst time cycle concept. Hurst time cycle का ये concept है, उसको derive किया
using that concept. This is a 29 period. Why 29? That's a science which is completely about Kal Chakra. Time is Kal, Chakra is cycle. That's a science. Basis of this, we get a downside target looking at this concept. Now, if I look at this concept and I try to measure the downside target, I can measure the downside target by looking at the measuring tool here and price range. So this was the highest point and this was the point of intersection the first time. We get a target on the downside as per this FLD, which comes around this level, okay, which is achieved today. But there is another intersection that we are seeing is happening on the prices. Okay, that intersection, if I take much higher, so conservative target is achieved, aggressive target आना बाकी शायद आ सकता है. So if I take this as the target, this is the point of intersection over here from the top till this point as an intersection, and if I project it on the downside, I get a little lower or much lower target which comes to around this zone. Okay, so overall if I'm looking at this intersection, so दो है, एक इंटरसेक्शन जो हुआ था उसका टारगेट नीचे आ चुका है. दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बेसिस पे अगर मैं देखूंगा तो नीचे का टारगेट बड़ा वाला ओपन हो जाता है. सो कंजर्वेटिव टारगेट इज अचीव्ड. एग्रेसिव टारगेट जो नीचे का आता है दैट कम्स टू अराउंड 23,944. The reason now I am coming out with a positional target is because prices have shown acceptance below the most important zone जो अभी तक protected था. So this was the price action zone. This was the price action zone. ये वाला zone. This was the most important zone and we have an acceptance. यहां पर इसे हम कहते हैं acceptance below the zone. So this is an acceptance, and so I am now getting nervous for being bullish. As simple as that. When do I give away my target and assume कि एक जो conservative target था वो आगे aggressive target नहीं आ रहा है? This will happen once I see prices are moving back above the level of 24,600 जो आज का हाई के ऊपर है. इस हाई के ऊपर जाना जरूरी है और इस हाई के ऊपर क्लोज देना जरूरी है. सपोज ओवर द वीकेंड ट्रम्प का मूड चेंज हो जाए या पीएम मोदी जाके कुछ नेगोशिएट ओके, मतलब नॉट पीएम मोदी बट जनरली जो भी टीम है हमारी, they are able to negotiate a deal and we see a reversal that happens because right now the market is driven with respect to some news respecting the levels. बट अगर न्यूज आ जाती है तो भी हमें वेट क्या करना होगा? 24,600 के ऊपर का क्लोज. इफ निफ्टी मैनेजेस टू क्लोज अबाउट 24,600 वी कैन से दैट ये पूरा नीचे का मूव था, ये फॉल्स हुआ और रिवर्सल अपसाइड शुरू हो गया. नहीं होता है तो नीचे का जो टारगेट है अराउंड 23,944 का लेवल is now opened on the downside looking at this concept of FLD. Basis of this also, the high which is formed here at 25,600 should not be breached. कब तक ये हाई ब्रीच नहीं होना चाहिए दोस्तों? ये हाई ब्रीच तब तक नहीं होना चाहिए जब तक निफ्टी does not approach 23rd September 2025. मैं ये चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और ये डेट्स आपके लिए मेंशन करता हूं. दिस इज द पावर ऑफ काल चक्र. मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है. ऑलवेज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एंड क्लियरली. इट मीन्स दैट until this time, okay, until this time 23rd September 2025, markets can go up but it might not be able to take out 25,600. So 23rd September पे हमारा
दूसरा काल चक्र या टाइम साइकिल आता है. Once 23rd September 2025 is there, we can start looking for another classic reversal on the upside. So if you are able to see this count, the Elliott wave count, are you able to see the Elliott wave count? We are expecting that this is ongoing wave D, which is still systematically ongoing, systematically downside momentum चल रहा है. भाव भगवान से 24,600 निकल गया, व्यू बदल देंगे. नहीं निकला, पोजिशनली शॉर्ट टर्म के लिए नीचे के ट्रेंड के लिए हम राइड करेंगे. सो निफ्टी हैज इंटरसेक्टेड FLD line, which is a time indicator on downside. Conservative target is achieved at today's low. At today's low, ओके. कंजर्वेटिव टारगेट, अगर हम कैसे कंजर्वेटिव टारगेट निकाला, ऊपर का पहला इंटरसेक्शन निकाला तो अचीव हो गया. बट एग्रेसिव टारगेट हैज नाउ ओपनड अप. दिस opened up, and the next major date of reversal is 23rd September 2025. और इस सारी चीजों की जो शुरुआत हुई थी वो लूनार के साथ हुई थी. कोई बता सकता है, आर देयर पीपल हु आर हियर फ्रॉम ब्रह्मास्त्र और काल चक्र ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड विद द लूनार साइकिल? एक्चुअली लूनार साइकिल देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है. लेट मी सी कौन कौन सही जवाब यहां पर देता है. लूनार साइकिल में क्या गड़बड़ थी आज से करीबन आई थिंक 1 महीने पहले से या 1.5 महीने पहले से? व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट वी आर सीइंग द लूनार साइकिल? फैंटास्टिक. निखिल बडाया ने सही जवाब दिया है that prices have been selling off on Amavasya and also on the Purnima. Both of the time cycles, the prices were selling off, and that was a sign of concern. But the price action, the problem this time was what? The price action here was so heavy. There was so much of volume data and the price action data here कि वो कन्विक्शन ही नहीं बनेगा कि यार यहां पर इतना वॉल्यूम और प्राइस एक्शन हो चुका है, प्राइसेस इसको ब्रीच करेगा कि नहीं करेगा, वो क्वेश्चन मार्क था. नाउ दैट वी नो इट इज ब्रीच्ड, वी नो इट इज डाउन, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डाउनसाइड मोमेंटम. दूसरी चीज अगर आपको देखना है तो इस चार्ट के साथ में एक और चार्ट जो आपको देखना चाहिए वो है गैन स्क्वायर ऑफ 9. चले गैन के चार्ट पे. इज इट इंटरेस्टिंग गाइस? I'm asking you, all of you, is this interesting? People on YouTube, are you liking it? If you want clarity, you can join me on the Zoom platform. यहाँ पे मैं क्विकली शेयर कर देता हूँ यहाँ पर Zoom का. एंड डायरेक्टर साहब सभी के साथ व्हाट्सएप लिंक शेयर की क्या आपने? सो दैट दे कैन जॉइन मी हियर. एंड प्लीज वो व्हाट्सएप लिंक को कॉपी करके रखिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट अक्रॉस क्विकली. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो इवन ऑन द very quickly, and by default वो करते रहिए जिससे people are able to be associated together. And I am going to share across my WhatsApp QR code also. मैं गैन के चार्ट पे भी जा रहा हूं. एंड नाउ ये WhatsApp QR कोड है, कम्युनिटी ज्वाइन करिए, थम्स अप दीजिए so that I know that you have joined the community. Okay, fantastic. जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, give me a big thumbs up. I am going to go from here on to the next part of it, which is the Gann square of 9. Shelly, do you want to look at the Gann? Okay. So wave pattern के हिसाब से we are still. So I'm just going to go back on the chart here. We are still in wave D, which is ongoing. And let's see, this low can be possibly challenged now. This is the low which was formed on 9th of May post the India-Pak war. It's going to be a very important low. And I think this is going to be a very, very important low. If we get market here by any chance, if I'm again repeating, if Nifty comes here by any chance, this will be a classic opportunity to re-enter. Classic opportunity for a reversal multi-bagger opportunity that we will get if it goes there. Let's see if it goes there. We are yet to see that happening.
फोरकास्ट है, भाव भगवान से समय बलवान से, दोनों को कंबाइन करना है, एंड देन वी हैव टू डू दैट. ओके, let me now go up on my another chart. And despite of these guys, the smaller 15 minutes time cycle and 5 minute time cycle is working fantastic. Smaller 15 and 5 minute is working fantastic. Okay, so I'm going to go now on a smaller, not a smaller, I'm going to go on a Gann square of 9 chart. The magnet of Gann stands broken decisively. Are you able to see, everyone? Are you able to see the Gann square of 9 chart? These lines, जो यहां पर आप देख रहे हो, these lines that you see here are Gann square of 9 lines and levels. These lines are very, very important levels. Okay. Now, when you're looking at these lines, so we have 24, 7, 28, the magnet. Okay, this was the magnet. Honest एक आंसर दूंगा मैं आपको. When I saw a huge failure breakdown yesterday, failed था ना, नीचे गया, पूरा रिकवर किया, 200 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग करा. I was optimistic that we might retest 24, 7, 28 again. लग रहा था प्राइस एक्शन देख के. लेकिन जैसे ही आज उसने 24, 540 ब्रेक किया, 490, 470 ब्रेक किया, मतलब गड़बड़ है यहां पर. एंड सो the magnet is now broken until and unless we capture it. So now the importance of this is now as a resistance. This is the magnet 24, 728. एंड ये सारी चीजों को आपको बहुत सही तरीके से समझना है. ओनली इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस साइंस इन अ प्रॉपर वे, तभी आप इसे सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे. बहुत सारे जन है जो इस साइंस को गलत सीखते, गलत अप्लाई करते और कहते आप तो बोल रहे थे ये होगा. भाई आई वॉज सेइंग दैट, बट देन प्राइस एक्शन, भाव भगवान से, प्राइस इज गॉड, रिवर्स हो गया, क्या करें. सो नीचे का जो टारगेट है 24,103, दैट्स द गेन लेवल दैट वी शुड बी एमिंग फॉर नाउ, विच मींस यहां से अभी भी अपॉर्चुनिटी है पोजिशनली ट्रेड बनाने के लिए. एंड 24,103 और इसके पहले का हमने लेवल्स ऑलरेडी देखा था जिसके बेसिस पे मार्केट नीचे जाना चाहिए ऐसा लग रहा था. सो दिस इज द लेवल ऑफ 24,103 as per the Gann, which has now stands opened up post today's closing. Closing is not good. कल का क्लोजिंग बहुत शानदार था, लेकिन मार्केट का मूड आज फॉलो अप का नहीं था. इट लुक्स लाइक इट वाज अ ट्रैप फॉर बोथ यस्टरडे. बेयर्स गॉट ट्रैप, शॉर्ट कवरिंग हुआ, शार्प ऊपर गया, बुल्स गॉट ट्रैप, एंड मोमेंट पे से रिवर्सल नीचे. लेकिन अगर आपने ट्वीट फॉलो किया होता दोस्तों, दोनों साइड पैसा बना और आज वापस नीचे के साइड पैसा बना. Let me ask you, are you following the Twitter handle or not? Are you able to do that or not? Are you seeing the scalping opportunities that you got? And now we are talking about an intraday opportunity here. So it is fantastic. Kiran Nayak कह रहे lovely. I can see that. चलिए YouTube पे देखते कौन कौन है. Lovely Mr. परमार, आप हो यहाँ पर. Very very clearly I can see that. Super. महेश रेड्डी आप भी हो. Lovely. So fantastic. यहाँ पर और यहां पर अभी आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ने के साथ में what we can do is we can also combine these techniques with one very powerful indicator, which is KST. If you combine this technique with KST on a 15-minute chart, KST is a 15-minute chart. Chetan Parmar, thanks for that. Glad to know. Prakash Rathod, lovely. Arpana, थोड़ा सा ये साइंस को समझिए, सीखिए, फिर कर सकते हैं. आप फॉलो कर रहे, lovely. So KST is a very very powerful way. You can combine this KST method along with the concept of time cycle, the 5-minute time cycle. Do you want to see the chart? 5-minute time cycle का चार्ट देखना है आपको. बहुत सारे जन का क्वेश्चन भी था, सर ये टाइम सपोर्ट क्या होता है. लेट मी गो ऑन द चार्ट हियर. दिस इज अ 5-minute chart that you can see here. Are you guys here with me? इस पे भी FLD लगा के टारगेट डिराइवेशन होता है. एंड
यहां पर भी ये 5 मिनट है फॉर स्कैल्पर्स. पीपल आर ट्रेडिंग स्कैल्पिंग हियर. मैं ट्वीट भी स्कैल्पिंग के बारे में कर रहा हूं. ये जो 5 मिनट चार्ट का जो जोन है, दिस वाज द लो फॉर्म एंड द रॉकेट एंड द इंटरसेक्शन ऑफ एफएलडी यू कैन सी हियर क्लियरली. आई एम गोइंग टू आस्क यू वन थिंग. आज के दिन में कैन आई से देयर वाज एन इंटरसेक्शन ऑफ एफएलडी ऑन द डाउन साइड हियर? गाइस, आर यू विथ मी? Can I say that there was an intersection of FLD on the downside here? If I project it on the downside, this is where the target comes of the FLD on a 5 minutes chart है. This is a 5 minutes chart. समझ में आ रहा है आपको? 5 मिनट चार्ट पे टाइम सपोर्ट क्या होता है? दिस इज अ टाइम सपोर्ट एरिया which was broken here. So how to trade time cycle? Do you want to know how to trade this 5 minute time cycle? So पहली चीज यहां पर टाइम जोन देखना है. Once we are in the time zone, which is this area, I need to observe if prices are managing to break above the swing high or the swing low. Okay, this is the time support area. ठीक है, टाइम सपोर्ट एरिया यहां पर है. If it breaks the swing low, if it breaks below the swing low, I can say that the downside target has opened. Downside target has opened because the swing low is broken now. How much is the target of downside? That is derived using FLD. So यहां से यहां तक का move was derived using FLD concept. That's the target that downside it has opened. Now, basis of this concept of FLD and the downside target, which is 24,320, we now can expect that target to be achieved before the next time cycle, before the next cycle date. This is a 5 minutes trading, which can be very sharp, fast, scalping kind of an opportunity. Similarly, yesterday there was a time support. Wait, FLD got cut here from the low, classic opportunity for the upside target of FLD. That was done and overshot on the upside. That was amazing. यहां पर अभी नीचे का टारगेट. सो 5 minutes chart also you can trade. 15 minute will FLD work? Absolutely. 15 minute पे भी FLD काम उतना ही अच्छे से करेगा जितना 5 minute के ऊपर करता है और जितना डेली पे करता है. इज इट 100%? नहीं. मार्केट है, इट वर्क्स 70%, 80%, 85% ऑफ द टाइम. रेस्ट ऑफ द टाइम एंड इट्स नॉट वर्किंग, मेंटेन स्टॉप लॉस, इंश्योर. और इसके साथ सबसे पावरफुल मेथड है वॉज KST. दिस इज द अल्टीमेट वे टू ट्रेड टाइम. स्टॉप लॉस यहां पर बड़ा नहीं होगा. अगर आप यहां पर ट्रेड कर रहे, आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई होगा, तो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा ही था मयंक. If you're looking at this, this is the stop loss that you are trading 24,420 and your stop loss is 24,470, which is a 50-point stop loss here. And then you are trading that. Are you getting my point? Are you with me? So this is how you have to look at it. And then you have a signal also on the KST indicator. KST never lies. Sandipan कह रहे it's working superb. Absolutely, Sandipan, आप तो time trader हो. People who are trading these concepts of time and KST are known as #time traders. So Nifty 5 minutes time cycle has been working amazing. Combine it with FLD and KST indicators and see the magic. यहाँ पर. Okay, so this is how you combine these two things together, and this is how you can see how it works fantastically well. Are you with me, every one of you? I'm just going to ask you one more thing. So bottom line in a nutshell क्या है? सब चीज समझ में आई. करना क्या है? बॉटम लाइन है मार्केट सेल ऑन राइज पे. कब तक? अनलेस एंड until we grow back beyond 24,600. Downside target Gann level 24,103, scalping target 24,320, and FLD target 23,940, 44 to be precise. Which means all of these views will be valid unless
24,600 breached. If that happens, we will see, and that's what trading is all about. When you have clarity, go all in with the stop loss. And when you are confused, wait for clarity and keep doing scalping. If you remember, I've been talking to you since 3 weeks on Twitter telling you to do scalping. I'm coming out now and telling you there can be a big move expected now. Okay, that is how you have to look at it. Sanjay Utture keh rahe, sir, great positional trading is excellent. Thank you very much. Neeraj Malik has been making amazing money. He shared across how much he made in 23 lakh. What I'm asking you all, are you guys loving this Friday at 4 web masterclass? Masterclass to Saturday ko hogi. Friday at 4 webinar on Nifty. Are you guys liking it? Last 2 weeks से मैं आपको मिस कर रहा था दोस्तों, क्योंकि IIMs में सेशन था. And I just thought I'll show you this frame also. If you can see my photo, I got this. I'm not sure if you're able to see this. That's an elephant that you can see, which I got, and I thought I'll just share it across with you all. And that's a souvenir which I got from IIM Trichy. यहाँ पर. And Neeraj Malik, it's you are there, fantastic. I've been getting across your profits that you made from learning Brahmastra time cycle. Weber Jain is excited about Brahmastra. How many of you are loving this, and how many of you want to share, want to be a part of this upcoming training on Brahmastra and Kal Chakra? हमारा काल चक्र का ट्रेनिंग हो रहा है. बलबीर सिंह कह रहे हैं सेशंस आर लाइक पावर डोजेस फॉर अस. लवली. काल चक्र का ट्रेनिंग हो रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू आर there to learn this complete science of FLD, KST, bring special K is a powerful indicator, looking at markets in a simple step-by-step, becoming hashtag time traders. लिंक शेयर करिए डायरेक्टर साहब सभी के साथ में for everyone who wants to be a part of Kal Chakra or Brahmastra. Amit Mishra, you have taken the Brahmastra. Fantastic. Glad to get you on board. And यहाँ पर lovely. Just give me a second. लिंक शेयर कर दी गई है आपके साथ में. You can go on that link, register yourself for the program of Brahmastra and Kal Chakra. So Brahmastra is covering Kal Chakra any which ways. यहाँ पर जाना है. Ashima has enrolled for Brahmastra. Fantastic, Ashima. Glad to go get you on board. And महेश, आप त्रिशूल बैच में हो. त्रिशूल प्रोग्राम में थोड़ा टाइम है हमारा, बट अगर आप ब्रह्मास्त्र में तो आपको ऑलरेडी सारी चीजों का एक्सेस मिल गया होगा. सो दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम है. यहाँ पर क्लियरली ये लिंक यूट्यूब पे भी शेयर करिए प्लीज सभी के साथ में, सो दैट यू एवरीवन कैन देन बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल लर्निंग. यूट्यूब पे शेयर कर दीजिए. हाउ टू अप्लाई टाइम साइकिल, ये सारी चीजों को हम सीखेंगे इस काल चक्र के सेशन में. We have limited seats. Early bird is ending by 13th of August for Kal Chakra and Brahmastra. So ensure you take care of that. And यहाँ पर बहुत clearly you can enroll for this Kal Chakra, which is 23rd, 24th August. क्या क्या मिलेगा? You will have a pre-session video here, which is going to be about. So pre-session video आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीक में 30 अगस्त पे मिल जाए. Do you have to go through that? साइकिल लाइंस कैसे अप्लाई करनी है वो प्री सेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. साथ में विल बी लुकिंग एट हर्स्ट टाइम साइकिल कॉन्सेप्ट इन मच डिटेल. विल लुक एट Gann स्क्वायर ऑफ 9 एंड यहां पर बहुत क्लियरली हम साथ में लर्न करेंगे एफएलडी को कैसे डिराइव करना है, हाउ टू डिराइव फॉर योर ओन स्टॉक्स, how to do this on your own stocks that you trade, how to look at Nifty 5 minutes, Bank Nifty 43, Bank Nifty 5 minutes chart, all of those things. We will do that, and we'll be combining with special indicator, which is known as Bring Special K as an indicator. We'll be combining with that. All of these things we are going to do with Kal Chakra as a special offer. जो लोग आज काल चक्र के लिए enroll कर रहे हैं, I'm also giving away access to an AK custom indicator. AK stands for Ashishkal indicator, which is a very powerful indicator for scalping opportunities that you can see in the market applied on a 15 minutes time frame. If you are a part of Brahmastra, you can pay a 10K token amount. 10,000 का आप टोकन लिंक शेयर कर दीजिए डायरेक्टर साहब.
and block your Brahmastra seat now itself, so that you get opportunity for the early bird. You get opportunity to be a part of Kal Chakra as a bonus. You get opportunity to get this AK indicator for 3 months. That is the opportunity. You just have to make a token payment of 10K for Brahmastra. You can do that. I'm open for questions, guys. And if you have any questions, doubts, you can ask me. I'm also going to take a very quick poll, which is over here. Let me just check. I think the poll is still ongoing right now, which I have to add. Okay, stop sharing. Okay, ये भूल गया था मैं. And यहाँ पर I am taking a very quick poll. If you want to be which path to financial freedom, Kal Chakra 23rd, 24th August, or Brahmastra, which is Astro ka Astra Brahmastra. People who are trading time is called hashtag time traders. We call them hashtag time traders. ये पोल में participate करिए. I am open for questions, guys. There is a question here, sir. Just a second. I'm getting many of these. How to get this indicator? I'll teach you everything. You don't have to worry about it. कैसे हमें प्रिंग स्पेशल के लगाना है, केएसटी कैसे यूज करना है, गैन को स्टॉक्स के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, हाउ डू वी ट्रेड दी स्टॉक्स by deriving time cycle, not only on the buy side, also on the sell side. Yes, we will be looking at that absolutely in this program of Brahmastra and Kal Chakra. Sir, I'm interested in learning from basic. Sandeep Nikam keh rahe, you can be a part of Brahmastra. Because in Brahmastra, I will give you a few videos that you have to go through it. आज ही मिल जाएगा access. Plus, you will be also getting access to tradership sessions. Every Wednesday हमारा mentorship होगा. Brahmastra is mentorship, where we meet 3 times in a month, and we'll be discussing about markets. Plus, you will be getting access to Kal Chakra. You learn about options, risk management, money management. बहुत crucial होता है. सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी. साइकोलॉजी बहुत कम जन समझते हैं, और उसके ऊपर बहुत फोकस है ये ब्रह्मास्त्र या मेंटरशिप प्रोग्राम में. Okay, economic cycle phase trading also. Yes, we have done that, man. Absolutely. Okay, even if you are रविंदर शर्मा, अगर आप काल चक्र लेते हैं, अगर आप अटेंड नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है. आप नेक्स्ट सेशन काल चक्र का अटेंड कर सकते हैं, और साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. ओके, धवल आप कह रहे यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र. जुड़िए. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. कहते हैं ना, अगर आप देर हो जाएगी तो चिड़िया चुग गई खेत. इसका क्या मतलब होता है कि यार करना है तो आज करना है, मतलब तो ही आप यहां पर आगे आ सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए. ओके, एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए रोहित उपाध्याय पूछ रहे, क्रिप्टो के लिए ब्रह्मास्त्र में जुड़िए. क्योंकि जो वैभव शर्मा है कि नहीं यहाँ पे, वो क्रिप्टो में बहुत एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं. ब्रह्मास्त्र के पार्टिसिपेंट है, और यह है तो एक फटाक से आप बताइए कि आप हो यहाँ पे. सो यू कैन लर्न अबाउट क्रिप्टो, व्हाट वी टेक्निक्स वी यूज हियर. यू कैन अप्लाई इट ऑन क्रिप्टो. फैंटास्टिक, नॉट टू वरी. ओके, वैभव जैन जुड़ चुके. वैभव शर्मा एक हमारे पुराने पार्टिसिपेंट है, उनकी बात कर रहा था. रविंद्र शर्मा को लिंक दे दीजिए प्लीज. यहां पर आप जा सकते हैं. यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन पे नाउ, फिल आउट द फॉर्म, एंड उन्हें क्यूआर कोड चाहिए. रविंद्र शर्मा आपका एक नंबर ड्रॉप कर देंगे, सो दैट माय टीम कैन जस्ट कॉल यू अप एंड शेयर यू द लिंक राइट नाउ, एंड आई विल बी, एज लॉन्ग एज द मास वेबिनार इज ऑन, यू कैन स्टिल डू दैट. हसन अली का नंबर उन्होंने दिया है, धवल गोयल ने दिया है. फैंटास्टिक. आई कैन सी Shriram has joined the Kal Chakra session. Lovely. I can see Roman आपका नाम थोड़ा सा शायद रोहन होगा. Rohan has joined Brahmastra session. Fantastic, Rohan. Just to get you a heads up, whatever we are going to learn in these sessions, the guys, it's going to be on historical charts. We'll be doing that. Plus, you will be getting 3 months of research access also. 3 months of Nifty research आपको मिलेगा in just 251 rupees if you are a part of Brahmastra. This 251 is only for people who are a part of Brahmastra now, who are joining. Okay.
I've already discussed about the Nifty levels right now, and correct, Khemchand, Nifty के बारे में 24,103 is the next level we are looking at, but as long as 24,600 remains intact. ध्यान रखना, भाव भगवान छे, समय बलवान छे, ट्रेडर पहलवान छे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो पैसा बनता है दोस्तों, तो उसका आपको ध्यान रखना है। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? ओके, लवली। एंड यहां पर एलियट वेव काउंट में वेव डी इज राइट नाउ ऑन गोइंग। Wave D can still go below the end point of wave C. So there is no such rule that D के अंदर A नहीं आ सकता, ऐसा कोई भी रूल नहीं है for a diametric pattern. Diametric pattern is the one which has wave B correcting wave C, wave D. Wave D enters into territory of wave A. That is allowed, that's possible, and that's how it's looking right now. Okay. And Rashmi Putra, glad to know you. And श्योर आपको, आप ब्रह्मास्त्र के पार्ट हो ऑलरेडी। निफ्टी का जो एलिट रिसर्च है, सो पीपल हु आर ज्वाइनिंग ब्रह्मास्त्र आर अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र रिसर्च एंड कालचक्र रिसर्च, दोनों के। एंड पीपल हु आर ज्वाइनिंग कालचक्र आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कालचक्र रिसर्च। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट इट। सो रश्मि, आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए, माय कलीग विल हेल्प यू आउट विद द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्रह्मास्त्र रिसर्च एंड कालचक्र रिसर्च। Okay, awesome, guys. Lovely. And I think I've answered many of the questions. जो यहाँ जुड़ चुके हैं वो भी एक confirmation मुझे दे दीजिए। Sir, I have paid a 10K token here, Abhijit कह रहे, and sure, so you can make the balance in 24 to 48 hours. At least आपकी sit block हो गई है, and the pricing is freezed. Balance amount you can pay within 24-48 using नेट बैंकिंग, और ईएमआई ऑप्शन भी है, सो यू कैन register using EMI also. There are EMI options also, so you can register Brahmastra under EMI option as well. So once you go here, you can check the EMI option. Okay, Manish has already paid. Fantastic, glad to get you on Brahmastra, Manish. It's always lovely to be having you here. Awesome, guys. And Ravinder Sharma, आप ठीक है, आप को 6 बजे बात करनी है, नो प्रॉब्लम, माय टीम विल हेल्प यू आउट विद दैट। खेमचंद को डिटेल्स भेज दीजिए डायरेक्टर साहब। ऑसम गाइस, लवली। एंड यहाँ पर जो लोग एक्ट कर चुके, मुझे कंफर्मेशन देते जाइए, एंड दैट्स गोइंग टू बी लवली। पोल इज ऑन गोइंग, सो यहाँ पर पोल में पार्टिसिपेट करते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप ट्विटर पे फॉलो नहीं करें तो करिए, 5-minute चार्ट पे टाइम साइकिल अप्लाई करिए, अप्लाई दैट ऑन अ 15 चार्ट combined with KST. Look at the concepts of FLD. It really works. Will it work 100%? No. It works. I'm going to be very honest. It works 75-80% of the times, 70% of the times. Remaining is risk, for which you need to know how to place a stop loss. You can derive price target looking at the concept of time. And time works. Amazing. And even during such kind of events, if you have been following on Twitter last entire week, I think every single time it has worked. Every single time the tweet has worked. And that's the proof that it works. Fantastic. लवली, ईएमआई ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको, ये लिंक पे जाना है। सभी के साथ ईएमआई की लिंक शेयर कर दीजिए, एक काम करिए, सभी के साथ ईएमआई की लिंक शेयर कर दीजिए। यू कैन सिंपली गो fill up the details and click on the pay. There you will start seeing the EMI option also. So let me just share across the details here. Just give me a second. How do you get on the link which is shared across to every one of them? So some are still facing that challenge. Let me just help them. Once you go here, this is the screen, and you have to simply, this is my office number. Once I do that, pay the amount here, and you will get the GST credit. Do not worry about it. Just let my team know the GST number and the details. So Manish, just have to do the registration. The invoice will be sent across to you. In the EMI, as low as 4978 is the EMI that you can register. Lovely. HDFC और SBI भी है शायद. My team will help you out.
My team will help you out with another link. Please आपका number drop कर दीजिए Aswartha, and my team will help you with the respective links. Absolutely. Fantastic, guys. It has been lovely speaking to you, all of you, and it has been fantastic to be a part of this journey together with every one of you. And we are going to be loving having you onboarded for the Brahmastra and Kal Chakra sessions. Take your step forward. और एक और चीज, कल रक्षाबंधन के दिन सुबह कोई अवेलेबल है क्या? वेर वी आर, चलिए देखता हूं, मैं आपको बताऊंगा अगर बहुत सारे जन ऑक्यूपाइड होंगे, मुझे लग रहा है. सो लेट्स सी. इट्स फैंटास्टिक टू हैव यू ऑल हियर. FLD is Chiku span of Ichimoku cloud. Yes, Sanjay, you are fantastic. FLD is Chiku span of Ichimoku cloud, just a little different. FLD is plotted of the past. Sorry, of the future. Chiku span of Ichimoku is the past, but both are essentially time shifted. That's the power. Okay, lovely guys, and it's fantastic to have you all here. Love talking to you all. Thank you very much for listening me out on Friday at 4, and see you soon. Do not forget to register for the Brahmastra and Kal Chakra with limited seats under the offer that I have talked about. Thank you. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.